Hello friends, I am Deepanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Deepanshi, and I hope you are doing well. Today I will discuss this pattern, and in this pattern we used the nested for loop to build this code in Python language. So firstly we create outer for loop, and in this outer for loop we take 1 as lower limit and 6 as the upper limit, and outer loop is used for moving the rows. Now we create inner loop inside this outer for loop, and in this inner loop we take 1 as lower limit and 6 as the upper limit, and inside this inner loop we check the condition using if else statement. We check the condition if I less than equals to j, then we print the outer loop variable, that is I, because this is a row wise pattern. In each row numbers are constantly repeated, and in else part we print the space, and outside this inner loop we used empty print function for cursor to the next line. When completing each row, cursor will automatically move to the next line. So when you execute the program, the accurate output is shown as below. इनिशियली आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है. कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, आई की वैल्यू क्या पॉइंट हो जाएगी 1. फिर जे की वैल्यू 1 से 2 हुई, वापस कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू अभी भी क्या है 1 ही है, तो आई की वैल्यू तो ऑलवेज क्या रहेगी, जे की वैल्यू से कम ही रहेगी. तो 5 टाइम्स आपकी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आई की 1 फर्स्ट रो के लिए. तो इसी तरीके से आप इसको ट्राई एंड रन करके देख सकते हैं. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द पैटर्न सीरीज ऑफ पाइथन लैंग्वेज, you can ask me anytime, and it is a crucial step to achieve your goal. Have a great day.